Hello, dear students. Welcome in my channel Shivam Education for Chemistry. Today we will study 20 different sort questions. This can be asked in a 1 or 2 mark and based from aldehyde and ketone. So let's we start. Now the topic covered in this module are first structure and property of aldehyde and ketone, Clemmensen-Wolff-Kishner reduction reaction, similarly, condensation and addition reaction of aldehyde and ketone. So let's start. One by one, I will give you question, then I will try to explain you answer of this question. Now, first question is, what is meant by carbonyl group? Carbonyl group हम किसको कहते हैं? Now, answer is now whenever carbon joint with oxygen through a double bond, then this functional group is known as a carbonyl group. So very simple thing, what is meant by carbonyl group? The functional group in which carbon is joined with oxygen through a double bond, then this group is known as a carbonyl group. Now you are knowing very well carbonyl group containing compounds are aldehyde, ketone, carboxylic acid and lots of derivative of carboxylic acid. So second, aldehyde and ketone are called which type of isomer? Now we know that aldehyde and ketone both are carbonyl group containing compounds. Now both this aldehyde and ketone having a general formula CnH2nO. So they have same molecular formula but they have a different functional group. So you are knowing very well the compound in which molecular formula same but different functional group, then they are known as a functional group isomers. So we can say that aldehyde and ketone are functional group isomer. I hope dear students you are able to understood. Now think on this question number 3rd. Give names and formulas of functional group of compound having a molecular formula C3H6. Now C3H6 molecular formula containing compounds आपको find out करने हैं. So just now we have seen that C3H6 is just similar to CnH2nO. तो इस compound के दो structure होंगे, one belong to aldehyde and one belong to ketone. Now think on this 3 carbon containing aldehyde and 3 carbon containing ketone. So the answer is 3 carbon containing aldehyde is propanol, 3 carbon atom 1, 2 and 3. Aldehyde name will be propanol. And 3 carbon containing ketone is propanone. So these both having a 3 carbon atom, 6 hydrogen atom and 1 oxygen. So they have same molecular formula, different functional group. So they are functional group isomers. One belong to aldehyde and second belong to ketone. So now let's go for next question. Question number 4. Give IUPAC name of diphenyl ketone. Now carbonyl group is attached with 2 phenyl ring. Then what is IUPAC name? Sochior. Answer is benzophenone. Now benzophenone formula carbonyl group is attached with 2 phenyl ring. आपको पता है बेंजीन, ये जो benzophenone नेम है वो accepted IUPAC नेम है. So it is accepted IUPAC name of diphenyl ketone. Now give the electronic structure of aldehyde and ketone. Aldehyde और ketone के electronic structure को हमें पढ़ना है. So we know very well that aldehyde as well as ketone both having a carbonyl group. So carbon joined with oxygen through a double bond. Aldehyde किसको कहेंगे? If carbonyl carbon is joined with one alkyl group and second will be hydrogen, then it will be a aldehyde. If carbonyl carbon is joined with a both alkyl and or aryl group, then it is known as a ketone. अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में double bond है, then one is a sigma and second is pi. So sigma bond is strong and pi bond is weak and non-hybrid orbital will form a pi bond. This carbonyl carbon having a partially positive charge, oxygen having a partially negative charge.
Now oxygen having a two non-bonding electron pair. This electron are known as a lone pair and it is given in this type of dumbbell shape orbital, means it is in a p orbital. So one by one conclusion, in carbo both are aldehyde and ketone, they have one sigma bond and second will be pi bond. The type of hybridization of carbon as well as oxygen will be sp2. आपको पता है डबल बॉन्ड यानी sp2 hybridization, सिंगल बॉन्ड यानी sp3 एंड ट्रिपल बॉन्ड मींस sp hybridization. जब sp2 hybridization होगा then this bond angle RCO, this bond angle will be 120. So bond angle RCO will be 120 both in aldehyde as well as in a ketone. So this is the electronic structure of aldehyde as well as ketone. आपको 2 marks में पूछा जा सकता है. You can give answer perfectly. Now next question is why boiling point of aldehyde and ketone are lower than alcohol. आपको बताना है कि aldehyde और ketone के boiling point alcohol से कम क्यों होते हैं. Now we know that intermolecular hydrogen bond is possible in alcohol but it is not possible in aldehyde and ketone. अब intermolecular hydrogen bond क्या है आपको पता है कि भाई partially negatively charged electronegative atom joined with a positively charged hydrogen with weak force of attraction, then this weak force of attraction between a two molecule is known as a intermolecular hydrogen bond. So in alcohol intermolecular hydrogen bond is possible but in aldehyde and ketone this intermolecular hydrogen bond is not possible. But in aldehyde, carbon-oxygen carbonyl group is polar group. So it has an intermolecular attraction between a two aldehyde or two ketone, but it will be comparatively less as compared to intermolecular hydrogen bond. Therefore, we can say that boiling point of aldehyde as well as ketone are lower than alcohol. Now, suppose आपको arrange करने हैं boiling point of aldehyde and ketone and alcohol. So first highest will be alcohol, then after aldehyde, then after ketone having a similar molar mass. चलो आगे बढ़ते हैं. Next question. Question number 7. The boiling point of aldehyde and ketone are higher than corresponding hydrocarbon and ether. अब इथर और हाइड्रोकार्बन से aldehyde और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. Why? This we have to understood. तो चलो समझते हैं. Now aldehyde और कीटोन दोनों के पास कार्बोनिल ग्रुप है. This group is polar. So oxygen having a partially negative charge, carbon having a partially positive charge. Hence intermolecular attraction will be present in a aldehyde and ketone. Now when we take hydrocarbon as well as ether, there is a no any polar bond. अब उसके पास polar bond है ही नहीं, hydrogen bond भी possible नहीं है. So intermolecular attractive force between hydrocarbon and ether will be very less. So boiling point of aldehyde and ketone are higher than corresponding ether as well as hydrocarbon. तो चलो मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं. टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप को बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं. मैं आपको बताऊंगा इज इट योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. आपको अरेंज करने हैं aldehyde, कीटोन, हाइड्रोकार्बन, ईथर एंड अल्कोहल. उसको बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू. मेंशन द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. आपको पता है डेरिवेटिव्स यानी क्या? जो एक मेन कंपाउंड में से दूसरे कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप प्रिपेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स. अब आपको एक मजेदार एक्सप्लेनेशन देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ. चलो मिल्क के डेरिवेटिव बताओ. तो आप मुझे कहोगे बटर मिल्क है, कर्ड है, different type of sweets and chocolates. These all are derivatives of milk. Similarly, derivatives of carboxylic acid are acid chloride,
then after anhydride, ester as well as amide. कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करोगे by a different functional group. If replaced by a chlorine, then acid chloride RCOCl will be obtained. RCO twice O यानी anhydride, RC double bond OR dash यानी ester और CONH2 यानी amide. So these all four are derivatives of carboxylic acid. Now question number 9. What is called fatty acid? आपको बताना है कि fatty acid किसको कहते हैं, हमें समझना है. तो carboxylic group when joined with a alkyl chain, then it is known as a alkanoic acid. If number of carbon are more, then it is known as a fatty acid. And common, we can write that CH3, CH2n times and COOH. So fatty acid or different type of fatty acid we are using as a oil in our day-to-day life. Suppose linoleic acid, then after stearic acids or different type of oil we are using in our food item. These are the nothing but a fatty acid. Now next question, what is formalin and mention its use? The most important and easy question, what is formalin? Now formaldehyde, one carbon containing aldehyde, formula is HCHO. It is in a gaseous form, generally at a room temperature. Now when aqueous solution is prepared, it is known as a formalin. So what is formalin? Aqueous solution of formaldehyde is known as a formalin. अब आपको पता है कि aqueous solution क्या है? Aqueous solution means solution prepared in a water. So when formaldehyde, which is in gaseous form, dissolve in water, we get aqueous solution which is known as a formalin. Now formalin used, आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ डेड एनिमल आर प्रिजर्व्ड इन ए फॉर्मेलिन. इन मेडिकल फील्ड टू प्रिजर्व डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग either formalin is used or cold storage is used. So formalin is used to preserve dead body as well as it is used as a disinfectant. Similarly, in our chemistry, with help of formaldehyde, we can prepare different type of plastic material. Suppose formaldehyde with phenol, we are getting a bakelite. Polymer chapter में हमने पढ़ा है. Then after formaldehyde with a urea, we are getting urea formaldehyde polymer. Formaldehyde with a melamine, we are getting a melamine polymer which is unbreakable. So it is used to prepare cup, plate and dish which are unbreakable. So these are the formalin and it with its use. Now mention the use of acetone. आपको पता है 2-propanone CH3COCH3 is known as an acetone. So in our day-to-day life, acetone is used in laboratory as a solvent. Then after in a nail polish to dissolve paint, we are using acetone as a solvent. Then in lacquer industry also acetone is used. So generally acetone is used as a solvent as well as reagent in a laboratory. Many organic compounds will be soluble in acetone. Now next question number 12. Mention characteristic of carbonyl group reaction of aldehyde and ketone. आपको बताना है कि aldehyde और ketone की chemical reaction कौन सी है. Then very simple thing, we have studied that aldehyde as well as ketone having a carbonyl group. Therefore, they are giving us nucleophilic addition reactions. And we have studied that nucleophilic addition reaction is possible with a hydrogen cyanide, sodium bisulfite, and also with a Grignard reagent. Now, question for you. Why aldehyde is easily oxidized as compared to ketone? Why aldehyde can be oxidized easily with a reagent as compared to ketone? Now, when we take aldehyde, except formaldehyde, all aldehydes यानी एसिड aldehyde से लेके जो भी aldehyde आपको आता है वो
उसमें कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1. Now when we take any ketone, the oxidation number of carbonyl carbon will be +2. तो जब जब ऑक्सीडेशन नंबर जिसका कम होगा उसका ऑक्सीडेशन इजीली हो सकता है. Hence, by using a weak oxidizing agent like bromine water, neutral KMnO4, ammonical silver nitrate, or alkaline COMnO4, we can use for oxidation of aldehyde. But if we want to perform oxidation of ketone, we have required strong oxidizing agent. So आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि चलो कीटोन का हमें ऑक्सीडेशन करना है, then which strong oxidizing agent can we use? चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यदि आपको 2 मार्क में पूछा जाता है तो उसका आंसर किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ. Wolff-Kishner reduction reactions. Now this Wolff-Kishner reduction reaction used to convert carbonyl group of aldehyde as well as ketone into hydrocarbon. यानी कार्बोनिल ग्रुप है जो aldehyde और ketone का, उसको हम हाइड्रोकार्बन यानी CH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं. Now for this reaction we are using hydrogen. हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2NH2 and KOH. This is used as a catalyst in these reactions. अब यदि आपको उसके मैकेनिज्म पढ़नी है then go with my lectures Wolff-Kishner reduction reaction with a mechanism. तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा. चलो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी कर लें कि in Wolff-Kishner reduction reaction this carbonyl group is converted into methylene group. So ketone as well as aldehyde will be converted into hydrocarbon. चलो दोनों के एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं. CH3CHO उसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड. नाउ एसिटाल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप जो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. दिस विल बी रिड्यूस इनटू CH2. एक हाइड्रोजन था, so this group is converted into CH3. So by using Wolff-Kishner reduction reaction, acetaldehyde is converted into ethane. 2 कार्बन वाला aldehyde था, उसमें से हमें 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मिला. अब बाय प्रोडक्ट हमें हर बार क्या मिलेगी? नाइट्रोजन as well as water molecule. Now similarly next, this acetone 3 carbon containing ketone. So this carbonyl group will convert into methylene group. Simple basic concept. किस तरह से कन्वर्ट होगा तो आप मेरे मैकेनिज्म वाला वीडियो देख के समझ लीजिए. मैं इसका कमेंट बॉक्स में आपको इसकी लिंक भी दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. So name of this structure is acetone converted into propanol. So very simple and easy thing. What is Wolff-Kishner reduction reaction? Wolff-Kishner reduction reaction is used to convert carbonyl group of aldehyde and ketone into simple hydrocarbon CH2. 2 carbon वाला aldehyde, then we get corresponding 2 carbon containing hydrocarbon यानी ethane. acetaldehyde 3 carbon, सॉरी यहाँ पे नाम आपको एसीटोन देना है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. यहाँ पे नाम आपको देना है एसीटोन. 3 कार्बन कंटेनिंग एसीटोन, उसको हम बोलते हैं प्रोपेनॉन ऑल्सो. तो ये प्रोपेनॉन है, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन में. रिएजेंट आपको याद रखने हैं हाइड्रोजन यानी NH2NH2 और अल्कलाइन KOH. तो चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क. एक्सप्लेन क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन. क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है? नाउ व्हेन carbonyl group containing aldehyde or ketone are reduced by using a zinc amalgam. Amalgam किसको बोलेंगे? यानी zinc and mercury mixture is known as a zinc amalgam. And with this we are using a concentrated hydrochloric acid. अब same as Wolff-Kishner reduction reaction, here also carbonyl group of aldehyde or ketone reduce into simple methylene group.
तो यानी एल्डिहाइड और कीटोन में से हमें सिंपल हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो चलो उसके एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। चलो ये हुआ बेंजीन रिंग COCH3 या फिनाइल रिंग पर COCH3 ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे एसिटोफिनोन। अब हम रिएजेंट यूज करेंगे तो एसिटोफिनोन का ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिथिलीन ग्रुप में। सो वी विल गेट सिंपल हाइड्रोकार्बन। सो कीटोन जो है हमारे पास उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं by using a Clemmensen reduction reaction and reagent are zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid. चलो क्वेश्चन नंबर 16, how addition reaction of sodium bisulfite with aldehyde and ketone is useful। तो हमें पता है कि चलो एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शन होती है सोडियम बाइसल्फाइड से तो उसका यूज क्या है। तो व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्टिंग विथ सोडियम बाइसल्फाइड तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी, वो वाटर में इंसॉल्युबल है, उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर से हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं होती है। So this reaction is used for purification of aldehyde and ketone. Similarly, it is used to separate। सपोज हमें जो ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हुई है, हमें इनसॉल्युबल मास मिलेगा, इम्प्यूरिटी रिएक्ट नहीं होगी, तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। जो हमें सॉलिड मास मिला उसको हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे, then we are getting a aldehyde as well as ketone। So just I have informed you this reaction is used for purification of aldehyde and ketone। जो aldehyde और ketone है उसका हम प्योरिफिकेशन इस रिएक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। Now question number 17 for you, which reaction should be used to prepare tertiary butyl alcohol from acetone। अब एसीटोन में से हमें टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है तो कौन सी रिएक्शन से बनेगा। तो हमने पढ़ा है कि चलो कार्बन इंक्रीज करना है, देन यूज दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो बाय यूजिंग दिस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब एसीटोन के साथ रिएक्ट होगा हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगी। व्हेन वी डू हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस वी विल गेट ए टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका आपको डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ पढ़ना है, देन गो विथ माय लेक्चर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketone with a Grignard reagent। Now question number 18 for you, what is meant by condensation reaction of aldehyde and ketone। ये aldehyde की और ketone की कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है। Now this aldehyde and ketone both are carbonyl group containing compound। When it reacting with hydroxylamine यानी NH2NH2 then it is giving us a oxime। aldehyde और ketone की रिएक्शन होगी हाइड्रोजन से तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन, उसकी रिएक्शन होती है फिनाइल हाइड्रोजन से तो हमें मिलेगा फिनाइल हाइड्रोजन, और हर बार 1 molecule of water will be obtained as a byproduct। So इस रिएक्शंस का यूजफुलनेस क्या है, then aldehyde or ketone can be converted into corresponding oxime, hydrazone और phenyl hydrazone by using these reactions। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है मेरी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ, जिसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। सो पढ़िए अच्छी तरह से, और यदि कुछ डाउट और क्वेश्चन हो तो पूछते रहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन यानी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन इनसे होती है हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिलेमाइन, then we are getting a corresponding product with a water molecule। So this characteristic reaction is known as a condensation reaction। Now next question, question number 19, what is meant by Hoffman reaction। Give example of this just only for 2 marks।
तो अभी आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट. By using a Hofmann rearrangement reaction, this amide is heated with a bromine and sodium hydroxide. So any amide when heated with bromine and sodium hydroxide, then we will get a primary amine having a one carbon atom less. This reaction is known as Hofmann rearrangement reactions. तो Hofmann rearrangement reaction क्या है? Amide is converting in a primary amine having a one carbon atom less, and reagent are bromine as well as sodium hydroxide. So this reaction is known as Hofmann rearrangement reactions. इसकी भी डिटेल में मैकेनिज्म है, तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा. यदि आप चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हो. यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ. So reaction of amide with bromine and sodium hydroxide to giving us primary amine which have one carbon atom less than original amide is known as Hofmann reaction. तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं. ये 2 कार्बन वाला एमाइड है, इसका नाम क्या होगा? एसीटेमाइड. आप जानते हो ब्रोमीन Br2 और 4NOH. अब हमें एक कार्बन कम ऐसा एमाइन मिलेगा, तो उसका स्ट्रक्चर होगा CH3NH2. बाई प्रोडक्ट में हमें ये सपोज 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एंड 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड के मिलेंगे, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, 2 molecules of water मिलेगा. So whatever amine obtained here, it has a name is methyl amine, or aminomethane also we can write. So simple concept, amide is converting into amine having a one carbon atom less. This is known as a Hofmann reaction. Now question number 20. Why aldehyde and ketone and carboxylic acid having a low molecular weight are soluble in water? यानी आपको बताना है कि जो aldehyde, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका मोलेकुलर वेट कम है वो वाटर में soluble क्यों है? Then very easy things. Aldehyde, ketone as well as carboxylic acid in their aqueous solution they form a intermolecular hydrogen bond with a water. यानी aldehyde, ketone और carboxylic acid है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं. Because of this, they are soluble in a water. Now, as the number of carbon atom increase, molecular weight will increase. It create hindrance, so solubility will decrease. So 2 point आपको समझना है. First, aldehyde, ketone and carboxylic acid water molecule के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं. So they are soluble in water if they have a low molecular mass. अब molecular mass बढ़ेगा, then solubility in water will be decreased. So dear students, आज हमने पढ़ा 20 short question from aldehyde and ketone. यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लगा, then subscribe COM Education for Chemistry to get informations of each and every uploaded video. तो चलो आपको कैसा लगा जो मैंने आपको बताया कमेंट बॉक्स में, उस क्वेश्चन का आप आंसर भी रखिए और मुझे बताते रहिए कि आपको कैसा लगा. चलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. गुड बाय, सी यू इन